वेलकम बैक माय ऑल फ्रेंड एपिसोड ऑफ या फिर कह सकते हैं फाइनल एपिसोड ऑफ गॉड ऑफ वॉर 2018 वेलकरी हंट। जो भी वाइट टाइटल वगैरह आप पढ़ ही लिए होगे। तो दिखा, तो आज हम फाइनली क्या कहते हैं जो वेलकरी क्वीन है उससे फाइट करेंगे। सारे के सारे जो हेलमेट्स हैं उनको उनकी थ्रोन्स पर रखा जाएगा और वेलकरी क्वीन को बाहर समन किया जाएगा एंड देखते हैं कौन किसकी मारेगा। एंड मैं बता भी दूंगा भाई मैं कितनी बार मारा हूँ। तो हाँ, थोड़ा बेटा पास के लेट्स द बिगिन। This is it, right? The rock stool? Aye, lad. The Council of Valkyries. The Valkyries are of Valhalla, are they not? Glad to see you're paying attention, brother. You are correct. Valhalla, the great hall of the Einherjar, is their home within Asgard. But while there, they are subject to the scrutiny of the All-Father himself. And relations between the Valkyries and Odin were tense during my tenure as his advisor. Why? Well, that's an even longer story, lad. For now, why don't we look around for some clues? Okay, place the 8 helmet. तो देखा है तो हाँ, आज की फाइट काफी तगड़ी होने वाली है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। Try placing one of the Valkyrie helms on a throne. Okay. She? Gunnar, mistress of war. After any conflict, big or small, she would be first on the scene, sussing out the worthy spirits for a free trip to Valhalla. A gruesome task, but she took great pride in it. Any conflict. Impossible. It's true. She had help from her sisters, of course, but Gunnar was always first to arrive. Her judgment of the fallen was unparalleled, and an invaluable resource to Odin. She was one of his favourites. Okay, next. Gondul. Beautiful Gondul. And? Huh? That's it? Beautiful Gondul? No story or anything? Oh, sorry, lad. The sight of Gondul always took my breath away. Gondul had a silver tongue, a sharp wit, and struck a figure so stunning it literally drove men insane. Odin forbid her from setting foot in Midgard after a time, as insanity is not a welcome trait in Valhalla. Okay, next. Oh, ये क्या गिरा? जो भी है। ओके, जो भी है। हाँ, पता नहीं कौन सा ट्रेजर मैप हमने कंप्लीट कर लिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। This is none other than Geirdriful, the master of arms in Valhalla, responsible for arming and training Odin's Einherjar. His what? His army come Ragnarok. The entire reason Valhalla exists, you see. The Einherjar wait in the Great Hall endlessly, feasting, drinking and fornicating themselves silly. Once Ragnarok begins, Odin calls them into service to fight on his behalf. Geirdriful had her hands full training that lot. Okay, next. This, my friends, is Kara. Now, Valkyries are volatile by nature, but Kara, the lass is wild storm personified. A wild storm. Aye, calm and collected. Then the air would shift and the fury of her storm would unleash. It was beautiful in a way, assuming you could find proper shelter. Her tears would cleanse the blood-soaked battlefields. Okay, and ये भी पहले कर लेता हूँ। Yes, अपने आप ही हो गया। अगला। This is Rota, a chooser of the slain. I
thought all the Valkyrie did that. Not exactly, lad. Although that is what they're most famous for, and by far their greatest responsibility. You've seen what happens to the dead without the judgment of the Valkyries. Hellwalkers. That's right. Rota, Gunnar, Skuld. Without them to clean up the aftermath of battle, hell overflows with souls meant for Valhalla. A sorry state of affairs. Rota must be beside herself. Okay, next. Ah, here we have Air, the healer. A Valkyrie healer? Strange. Air was strange, as a matter of fact. Very quiet, very calm. Where her sisters were violent rapids, Air was a gentle stream. She healed the wounds of both mortals and gods, and even a certain all-knowing sage who once drank too much and fell off a mountain. Not my proudest moment. Okay, next. Well, well, Hilda, mistress of battle. She and Odin got on quite well, actually. Her and the other Valkyries, not so much. She would spend most of her time here in Midgard observing discord between the living, and sewing some up herself from time to time. She lived for conflict. Some say she was conflict personified. I wonder what will become of her now that she's free. Okay, final. Olrun, once the daughter of a powerful chieftain. She fell defending him during a Reaver attack. Olrun was escorted to Valhalla, where she chose to devote her afterlife to the pursuit of knowledge above all else. Quite unusual behaviour amongst the constant drinking and feasting of her fellow Valhallian denizens. How'd she end up a Valkyrie? Odin. He saw a kindred spirit in Olrun's single-minded pursuit of knowledge. He appointed her as the Valkyrie's resident historian. ठीक है भाई, हम लोग ने जितना करना था कर चुके हैं एंड यहाँ से भाई वही मेन वैल्करी किड निकलेगी तो भाई शुरू करते तो भैया जय श्री राम। ओके सो देखा तो भूल चुका मैं कितने बार मरा हूँ। टेक्स्ट में जो भी सामने दिख रहा होगा तो भाई लेट्स गो। और ये ले और ये ले और ये भी ले और अरे ये ले अबे यार मैं टॉच कर रही हूँ किसी हुआ क्यों नहीं। ओके मार 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 ओके नहीं लगा। ओके और ये अबे यार पूरा बेकार चले जाता है। और ये ले और ये भी ले। ओके हाँ हाँ अबे फिर से ये ले सकते भी। अबे यार क्या है ये। फिर बच गया और ये मार अबे यार मुझे नहीं पता था ये करेगी। और मार 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 ओके
ओ नहीं, Okay, brother. ओके, फिर बच गया, फिर बच गया, फिर बच गया। ओके, और मार 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 मार, ये मिले। Have you considered a tactical retreat? ओके, ज्यादा हो गया, काफी क्लोज है, मुझे रेज यूज करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो। आई होप ये काम कर जाए अच्छे से। मार 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 मार, मार। और ये अबे मारना, थोड़ा सा बचा है, मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा। बच गया, एंड काम खत्म। Thank you, friends. You have saved the Valkyries. Sigrun, how did this happen? Mimir, is that you? You have been freed, but Freedom comes at a price, milady. you speak truly. Countless winters we served the All-Father, but only through his union to the Queen did we ever taste some measure of freedom. But aren't you the queen? There has only been one Queen of the Valkyries, the goddess Freya. When Odin severed her wings, I served in her absence, but it wasn't enough for the All-Father. He used an archaic piece of magic, corrupting my sisters. I tried to contain the damage by imprisoning them in places where they could cause no harm, but soon I lost myself as well. Sigrun, I'm sorry for being so worthless. I could have done something, or tried at the very least. What will you do now? I must reunite with my sisters. Together we can restore balance to the realms. You have the eternal blessings of the Valkyries. Well, we did it, I suppose. You don't sound very happy about it. It's difficult to be happy about anything when you're a reanimated head. I'm grateful we were able to set the Valkyries free. But so much of this could have been avoided, if only... You said it yourself, Head. It does not matter anymore. The past is the past. Well, that's awfully cheerful coming from you. I am in a good mood. The dwarves will make use of this helm. Your dad's a wee bit single-minded, isn't he, lad? Definitely. ओके, तो देखा तो फाइनली आज हम लोग ने वेलकरी फेवर कंप्लीट गॉड वर्सेस क्वीन। तो हाँ, एंड देखते हैं हम लोग क्या मिला है। हम लोग को मिला है एपिक एक्सपोमल थ्रो एंड रिकॉल बिकेम इनक्रेडिबली पावरफुल, लो पर एक्टिवेशन स्ट्राइक मैसिवली डैमेज एक्सप्लोसिव। नहीं, हम लोग के पास जो है वही है, ठीक है। परफेक्ट एसगार्डियन स्टील एंड लास्ट में ये वाला नॉजर टेम्पररी एपिक एनहांसमेंट, वेरी लो पर्क एक्टिविटी, चांसेस टू टेम्पररीली स्लो नियर बाय एनिमीज व्हेन डैमेज इज टेकन। शायद खैर बाकी सब जो भी है अपना पूरे ऑफिसर उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई यहीं पे इसको भाई एंड करते हैं। नहीं, इसको घर पे ले जाकर एंड करते हैं।
Wait, so Freya is the Valkyrie Queen? She never told us. You never told us. Explain yourself, Head. Or are you bewitched again? Not at all. Freya was Queen of the Valkyries at one point. Part of her marriage dowry included overseeing the Valkyries themselves. As a powerful Vanir goddess, they revered her. I never knew how much until now. Okay, we are finally home. एंड मुझे नहीं लगता कि मैं दरवाजा खोल सकता हूँ। नहीं, ठीक है, जो भी है। यहीं पे भाई इसको एंड करते। फाइनली आज हम लोग ने पूरी तरह से गॉड ऑफ वॉर का एंड कर दिया है, मेन तरीके से जैसे मैं चाहता था उस तरीके से। सो हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस एडवेंचर। एंड देखा तो आज हम लोग फाइनली इस गेम को एंड कर दिए हैं। अगले वीक से कोई और अच्छी सी गेम मतलब मैं ढूंढ ढांड के लेके आऊंगा। एंड देखा तो फ्री वाली होगी, फ्री में जो मुझे मिली वही होगी। कह नहीं सकता भाई लेटेस्ट होगी, लेकिन हाँ फ्री होगी, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं वापस पैसे नहीं लगाने वाला गेम में। पुराना चैनल हैक हुआ था, इसकी वजह से भाई अब मैं वापस रिस्क नहीं लूंगा। बट फिर भी अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया, आज का मेरा गेम प्ले पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको। नए हो पहले भी हमारे चैनल या फिर वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब ठोको, शेयर करो फ्रेंड लोग के साथ एंड प्रेस बेल आइकन फॉर डेली अपडेट। सो फिर से बोल रहा हूँ, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए नवेले ब्रांड न्यू एडवेंचर के साथ और ऑफ कोर्स एक नए गेम के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय।